evening. I hope everyone is doing great. My name is Mubashira Khan, and I'm delighted to welcome you all on the behalf of AMU Economics Students Club to today's webinar. So, first, let me introduce our club. Our club was established in 2021 by our senior and mentor, Mr. Atif Anwar and his friends. So, basically, in our club, students from different backgrounds participated in various academic activities. We seek to foster critical thinking, employable skills, and new ideas with the aim of creating a dynamic community. Over the time, we have organized activities such as workshops, discussions, and interactive sessions that provide practical knowledge, exposure, and skill building opportunities. So, with that, let's start our today's session Study in UK with Chevening and Turning Dreams into Reality. So first, I'm delighted to welcome Mr. Shishu Ranjan, a Chevening scholar who completed his bachelor degrees from St. Xavier College and went to pursue his master's studies at Raj University, Azim Premji University, and Birkbeck University of London. Also, I'm pleased to introduce Mr. Riazul Samad, another Chevening scholar who completed his bachelor's in architecture from the Faculty of Architecture, Lucknow, and his master's from the School of Planning and Architecture, Delhi, as well as the Queen's College University of Cambridge. And lastly, I would like to welcome Mr. Atif Anwar, a researcher at the Indian Institute of Management, Bangalore. With this, I would now like to hand over the session to Atif Anwar, who will take it forward from here. Thank you. Hi everyone. Can you all hear me? Hi. So welcome again. Thank you everyone for joining us here. I will be moderating the session. And before we begin, I would like to request everyone to please keep yourself on mute. And if you have any question in between, feel free to write on chat, but there will be a dedicated Q&A session. The rough structure of the session is such that we will start with the personal journey of the two Chevening scholars, and they will talk about the application process for both master's programs as well as the Chevening scholarship, and then we will have some discussions followed by Q&A. There will be like dedicated 10 to 15 minutes of Q&A session. Very welcome Shishu and Riazul Bhai. I would request, maybe let me choose one of you to start. So Riazul Bhai, so how about you talk about your personal journey, where you come from, why you chose architecture, and how has been your educational journey, and when you thought for the first time that, let's study abroad, and how you plan your Chevening scholarship, and how you plan your master's program, and all of that. Like this, I would just want to hear your story. Okay. Thank you, Atif, for inviting me for this particular section and sharing my journey with the future aspirant. So, hi, my name is Riazul Samad bin Mohammed, and I am partially from Delhi and partially from UP. Because some of my time I spend in Uttar Pradesh and some of time I spend in Delhi. So I partially consider myself Delhiite and also from UP. I come from a very small farming family from Uttar Pradesh. And I did my graduation in architecture from Lucknow Government College. After that, I decided that I need another degree to polish my skills. So in continuation, I pursue master's degree in urban design. Then I joined private organization to work as an architect and urban designer. While working almost 2 years. This master's was in Jamia. No, my master's is from SP Delhi. I see. Okay, so after that, I work for the Indian government, also for Ministry of Housing and Urban Affairs. I designed one of the prestigious projects like Mahakal Temple Rejuvenation Project. So it's one of my biggest projects, which I till now I have designed. And after that, Indian government sent me to the France. So I work on the with the France government on Paris Olympic Games village design. So I was the part of who designed the Paris Olympic, and there I designed 3 skyscraper. After coming back, so I thought that I need to share my learning with the future architect or something like that. So I joined Jamia University as an assistant professor on a contractual basis. And while I was teaching, so sometime I just thought about
That what research I should have to follow, what research I have to omit, because in the name of the climate change and sustainability, there are lots of reports, lots of information, and you don't know that which is comparatively true or which is partially true and which is relevant for us. For that, I decided that I need to upskill my skills, so that's why I apply for the my fourth master's degree. So this is not my first or second or something like that. So yeah, so this is like a brief profile. So before going applying for myself for master's degree, so few of my students already completed their master from like Italy, Germany, France, US. So that my students also encourage me to apply that, try something like that. So this is about brief profile me. Yeah. Shishu, over to you now. Sorry, I have unmute. Yeah. Oh, okay. Shishu has been a friend and a comrade brother from UTU. But I would like to hear more, and the audience would like to hear more about your journey. Thank you, Atif and the team for organizing such an amazing talk. First of all, I would like to, who is admin of this meeting, kindly allow some of my students. My friends are also trying to join. So yeah, it would be better if So I'm Shishu Ranjan, and first I did my chemistry. I did my MSc in chemistry, and then after I did my B.Ed from Jamia. And I was involved in active student politics in Jamia during the COVID time, and then I got to exposed with social justice ideas in education, that how we can include social justice. Whether it is related to caste, minority, and so many things. Just a second, please. हेलो. हाँ, यस I guess एक बार फिर से करो, हो जाएगा उसमें. हाँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो ना. They're allowing it. Okay. Yeah, sorry. Actually, one of the participants is calling me. So and then after I decided to go for another master's in education. So earlier I was thinking to do education in social justice from either from UK or any other universities. Till then I was not aware of any scholarships for master's programs in UK or US. Then suddenly I got to know about one of my friends with whom I have worked as in one of the NGOs. And I saw that he has been to Cambridge and he was on Commonwealth scholarship. So that was, hitting for me, because I saw a picture of him in the Instagram that, okay, if he can do something, he can do masters from UK university on a fully funded scholarship. That time I saw that, okay, now let me go through such things. And then I started searching around it. And I found that there are some scholarships that allows students who come from very marginalized background, who have no money. Because when I was in Jamia, few of my professors supported me to pay my fee. So you can understand, what I was going through that time. But I started looking for it, and then I got to know about Chevening, that, okay, Chevening is a scholarship that allows upcoming leaders, who are leaders in their field. It doesn't matter whether you are big leader or small leader, but you are making some impacts in your community or in whichever field you are. Leader means it can be in any of the fields. As for example, if Atif is a leader in economics, Riazul is a leader in architecture, then I thought, okay, let's be a leader in education, because I was leading some team, some student organization in Delhi. Then this is how journey started. I met with Atif in Azim Premji University, where somehow we were involved in a lot of things, and we became good friends. And since my roots are from Jamia as well, so I was always interested in visiting AMU, but I couldn't visit. Hopefully next time with Atif and Riazul bhai, I'll be able to visit AMU, the historical legacy. We'll be more than happy to host you in person once you return to India. Thanks for sharing your journey with honesty. But all of us have some ideas and perception about studying abroad. And one such perception is that foreign masters or foreign education is for the top students who are top rankers, and or for people who are very elite. So by it I mean that they're able to fund their education, and they have some 20-30 lakhs rupees ready. So I just wanted to know about
how were you guys as a student, and uh, what was your grades? What are the extracurricular activities that you guys were involved in, and like what kind of support network you had while you were applying for this scholarship? So I just want to know about three things, like how were your grades like, and what kind of extracurricular activities were you guys doing, and what kind of support networks you had while applying. Anyone of you can go first. Okay, Keshav, start. Okay. Yeah. Shall I go ahead? Yeah. Please. Floor is yours. Oh, I'm so sorry. I'm getting so many calls right now because I've shared this link. So I can start in that case. Attend the call. So, but yeah, I would request admin that if somebody is coming, just put allow. Yeah, they are allowed. Thank you so much. Okay, so for example, you ask about the grade, you ask about the extracurricular or curricular activities, and you also ask about the network and support from the network. So first, I would like with the grades. So I am not very bright student. I do not consider myself as a very bright student. For example, in my 10th, I score 25 marks out of 100 in English. And right now I am graduated from the Cambridge University. So I cannot say that your previous marks define you, that who you were. So you just have to be very, very, very reasonable that why that kind of marks you score at that time. What was the circumstances, maybe health, maybe financial. So there are many reasons that you might score comparatively low during that particular time. So it doesn't matter. So you just have to be reasonable about that, why you score that particular mark. So whatever marks you score, you own that particular like a pride or something like that. Whatever you score by yourself, and that was the reason that you score something like that. So I did not say that I am very bright student or something like that. And second question is about your curricular or extracurricular activities. So I always recommended the students, for example, that you want to say something? Yeah. So Razan bhai, I mean, there's a particular case where you might have not scored well, but I'm pretty sure that you have not reflected much on, or they wouldn't have asked you for your 10th transcript, right? They asked me. Oh. So they asked me, the Cambridge asked me to prove the English language test, and I didn't appear for the IELTS also. So I didn't give the IELTS exam. Generally, while you are studying in abroad, you need a IELTS exam. So I justified university that I know English. Then they asked me that show me your 10th or 12th mark sheet. How much you score? And I shared that it's just 25 marks. So they were like, how we can. So then I just put my justification, and after the justification they took my so Cambridge had their own English language test. So they asked me to appear for that particular test. So I appear for that particular test, and I qualify for that test. And in that manner I just got the way off of the English IELTS language requirement. And they asked me that why you are not taking the IELTS exam right now. So I just mentioned that I don't have that money. It's cost me around 17,000. So it's almost around 15 days work pay, equal to work pay. So whenever you're making about the money cost, in different country, there are the different earning limitation or something like that. For example, 20,000 is big amount in India, but 20,000 is not big amount in UK or US. So you have to mention that how much it equivalent in terms of the time. So I mentioned that it's the examination fees are costing around 15 days my earning. So it's quite expensive for me. How can I spare that much amount? So in that manner, they understand that I need an alternative way to arrange that particular thing. So yeah. Okay, but I mean, I'm also curious about your grades in your masters. In my masters, I am not the top scorer. I just what I can say in top 5 out of the cohort of 20. So I'm not that bright like a gold medalist or silver medalist or the bronze medalist, something like that. Similarly, in my undergrad, I was the 4th topper in my batch. So it's not like the topper or something like that. But the second question you asked, that complement your grade always. For example, if you have a batch of like 20 people or 30 people or 50 people, everyone is there to study, just only study. So what else you have done beside the study, how you are developed as an overall human being, and how you are incorporating or giving back to society. So that's matter a lot.
extracurricular activities. I've seen many people that who are the gold medalists during my undergrad. So during my the first master. So there are the competition from the national level and from the various university topper institute students who are also participating in that particular things. So how you outshine these competition that who are comparatively topper in their respective field, respective university or respective country. So you have to show that you have a extracurricular activities which is not easily findable to anyone else. For example, like you sing, you play music, or you do like art or something like that. So in my application I mentioned that uh, I generally mention that I organize a heritage walk to the people. And Cambridge is already a heritage-rich city where the university established in a 1200 century, something like that. So it's already 800 year old history. So I would like to organize the heritage walk to my cohort student to aware that what is the architecture or something like that, and how to draw the live sketching of the building. So I also organize the classes of the live sketching. So that particular skills you cannot find in anyone else. It's like more kind of unique aspect about me. And I mentioned that during my bachelor, during my master's, I organize these kinds of activities. Right now I have an active 1500 people network in Delhi. I generally organize that kind of walk every first Sunday in Delhi. So generally I took the people on the old Delhi or the Nizamuddin or Humayun Tomb, any heritage building, and I just asked the people to bring their lunch or something like that. We will had a potluck lunch kind of situation, and we will draw the building. It doesn't matter that how grateful you are at drawing or how bad you are at drawing. So just enjoy your first Sunday or something like that. So that things I believe that it's matter a lot. That what extra you comparatively give to your cohort, not just about that. Similarly, you have to mention that your leadership skills. That if you are have to lead a group of the people or the argument or something like that, so how you put your argument, how you lead that particular group. And there is a one more thing, that everyone does not able to control their anger or like a dispute. So this is comparatively very very good quality, that you always mention the incident while you are in your student union or maybe in your work culture, something like that. So where you encounter disagreement from your peer, that the people are saying that this idea will not work and I will not allow to do you something like that, and how you stood with that particular decision, that I have to do that particular thing, and what are the outcome of that thing. It doesn't matter it's a positive or negative. It doesn't matter that that particular idea is succeeded or failed, but matter a lot that you tried that. So kindly put these kind of soft skills, life skills, so it will be not create like a computer generated answer that I have completed my bachelor's, master's, something like that, I score distinction or something like that. So it just give more kind of personal touch. So kindly try to add these kind of detail. Then third thing about your network, because you need a LOR, something like that, and you need to ask the people that which course or which kind of thing. So it always helps you to encourage. So I generally I applied 14 different university in UK. So I just started with the SWAS University because I heard from the people that SWAS University generally gives the admission easily. So I applied in SWAS University. When I got the offer letter from the SWAS University, then I applied for the Sussex. In that manner, at the last I applied at the Cambridge University. So I don't suggest people to directly aim for the higher, but start with the low ranking or the mid ranking university, then go for the higher. Because when you get the rejection at the very first application, it will be demoralize you. So you just need a certain kind of self motivation that I can make it or something like that. So start with the low ranking university where your chances are comparatively very high to secure admission or something like that. And I saw someone ask in chat about my fourth masters. So, Yeah, this is maybe sorry, Azul bhai, I think students keep on asking their questions, so maybe we can like club them together and answer them all like later. Perfect. How were your grades during your bachelor's and masters? What? Okay, so
I mean, yeah, I think I'll be speaking, right? No, I was just saying that since we have a structured our presentation, and in between, I think we'll be covering it. By the way, I mean, my grades were almost around I mean, from 10th to all my masters, I have been always 70 plus scorer, but not 80. So it has been 72, 73, along with all my extracurricular activities like student activism, so many volunteering and blah blah things like that. But yeah, it has been 70%, but doesn't matter, I guess, because This guy seems to be like a above average student as well. kind of, yeah. In class, I was very active, but in terms of marks, I was like, okay, average, above average, that's it. Yeah. What kind of support network you had, like while applying? So, I mean, when I started thinking about going to abroad, I mean, for study, I mean, I never imagined myself that, okay, I'll go to study abroad. But when I started thinking about it, I reached out to a lot of people. So somehow I got connected to one of the previous Chevening scholars named Raju Kendre. And then after I started looking for him, I reached out to him that, okay, I want mentorship support because they were running some mentorship support from their organization. So I reached out to him. I reached out to a lot of people who have been a scholar already. And then see, I mean, I joined as a mentee that they were running one mentorship program. So I joined as a mentee. And then after I found out that I connected to a lot of people, I started I started drafting my essays. So there are essays we need to draft for any scholarship. I started drafting and I reached out to them that, okay, kindly review my essay. They reviewed it. They gave me few suggestions, just like I attended some sessions around it. And there are many sessions online, I mean, available online from Eklavya India Foundation. So I would request everyone to just go through their website, Project Edu Access, and there are so many organizations. They have their own resources everywhere across the internet. So just remember these 2-3 names like Eklavya India Foundation, Project Edu Access. They have many resources where you can get all the suggestions, networks. You can reach out to them. You can write to them as well. Along with that, you can. I mean, LinkedIn is very good opportunity where you can connect with these people. So if you'll be looking for Chevening, as for example, if you'll be checking the LinkedIn profile of Atif, Riajul, myself, then you'll find there are a lot of Chevening scholars. Click on them, look for them whether they are posting anything or not. So not just Chevening, maybe Commonwealth. It could be Rhodes Scholarship. So there might be many students here who might be there in their undergrads. So you can look for Rhodes Scholarship. It is quite competitive and very prestigious, but it doesn't mean that we cannot do it. If you are, I mean, eligible and you are giving proper time, your professors are supportive, kindly go with that. And I would also request that, I mean, the session that you are organizing with students, try to assimilate professors also so that, LOR, that real network recommender, letter of recommendation you need, it would be better if your professors are also writing your letter of recommendation for your university application because they need it. So in that case, I mean, we know the background we come from. Sometimes our professors are reluctant to give you a letter. They don't want to support. I mean, they want to support, but there are multiple bureaucratic structures, bureaucratic constraints that they'll be thinking, okay, why to get into all these traps? Why to support some student? So in that case, sometimes we need to involve professors in these kind of processes. So I involved professors also because few professors I knew that they knew about all these things and they supported me. They wrote a letter of recommendation for me that, okay, as for example, if somebody is as for example, any student X, they want to go to Cambridge for their economics. Now if you want to go to Cambridge for economics, they want very good mathematical skills from your side. They want a statistical background. So in that case, your professor should write, I mean, along with your statement of purpose that, okay, I know this student from this, I have taught mathematical modeling, sampling, this, there could be many things. And they should also explicitly write that I support XYZ student to get into this specific course and I know this person will be competent and and they'll contribute to your community of students, scholars, XYZ.
So that kind of support I started taking from my professors. I reached out to scholars. I went through a lot of resources. University websites will be very good option where you will be getting what they need. Because some university will have different demands. They will have different, some university might be more focusing on quantitative economics. Some will be like, okay, moderate qualitative and quantitative. So you need to check all these things, that what they are demanding. And this is how, I navigated through. Yeah. Thank you, guys. We will definitely keep on chit-chatting, but let's just, without further ado, let's start with your presentation. So, what do you guys? Yeah, so just a quick question. If anyone, see, हम लोग हिंदी वाले ही लोग हैं, हिंदी हिंदुस्तानी जो हम लोग हमारी भाषा जो है, तो if somebody is not able to follow in English, kindly let us know. हम दोनों भाषा में हम स्विच करके लगातार हम लोग बोलेंगे. तो अगेन मैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा हूँ. मैंने 10th तक कम्प्लीटली हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ, तो थोड़ी अंग्रेजी उतनी भी अच्छी नहीं है. हाँ, यहाँ एक बार थोड़ा बड़ा ठीक हो गया है. But still, if somebody is not able to follow, kindly don't feel embarrassed at all. मुझे भी अंग्रेजी शुरू में समझ में नहीं आती थी, तो बस सीखने से ही हुआ. तो don't feel embarrassed. हम हिंदी में भी बोलेंगे. तो kindly let us know कि आतिफ, what do you think? Should we be bilingual और अंग्रेजी में ही बोलें तो चलेगा, जैसा आप कहें. मतलब आप जानते हैं ऑडियंस को. Yeah, I think it's okay if we keep on speaking in English, but please don't use accent. नहीं, एक्सेंट तो अपना एक्सेंट है. तो yeah, shall we start with the presentation now? Yeah. Okay, so I'm sharing my screen. Yes, just let me know whether it is. I hope you have the. Yeah. I have the PPT. Yeah. So yeah, we can. Sorry. Yeah. It's visible. Consider. So, Riyadul, shall we start with the introduction? What is Chevening Scholarship? And maybe we'll go beyond. Chevening is I think before you guys start, can you all hear me? So before you guys start, let's clarify one thing. So I understand that most of our audience are second year, third year undergrad students, and perhaps at this stage they would want to know very basic things like what are the universities to apply, how many students are selected every year. We don't know, nobody knows. And so basically what I'm trying to say is that maybe they would want to know very basic things. In fact, just the name of few scholarships. We would definitely organize something like that, which will just tell you very basic things about the process of studying abroad and all of that. But for now, we are trying to somehow combine both. Meaning that we will talk about a specific scholarship, but at the same time we will also talk about the whole application process. Yeah, so here, yes, very rightly you said, Atif. So we'll start with the university application. Will it be fine, Rajul? Perfect. Okay. So let's start with the university application. Can I start? And then and then we'll go with the achievement. So yeah, university application. Please go ahead. So before the university application, I just start with that how and why you are planning to study abroad. So generally, different countries have different kind of fields. So identify your country first, that which country you are targeting. Every country has full-funded scholarship. It's not like that UK is a special one. It only had a full-funded scholarship or something like that. And each country's scholarship look like a different kind of application portal, time duration, or something like that. So today, generally, we are covering about only UK universities. So in UK, there are the three type of universities. First university, which generally call it like a Russell Group universities. So it's kind of 20 top universities, something like that. Generally, in India, we call it like an IRF ranking or something like that, top 10 university. Then we have a public university, which generally public university means like government university here. Then they have a private university, like similarly in India. So try to apply either public university or the Russell Group University. So you just have to go through that university website, whatever university you want to apply, identify your targeted program, and before starting your application, try to look the profile of the student.
who are current student or maybe a pass out student of that particular program, and how their profile look like in terms of that previous education, soft skills and hard skills. Then try to target your particular university, that these kind of skills that you have or not. Some university required, maybe right now maximum STEMs education required like Python or something like that, the coding knowledge. So you have that kind of knowledge or not. So identify your university, identify your program, and try to communicate with one or two or three or maybe more previous scholar of that particular program from that particular university. Generally in university, what documents you required? So you required your passport, you required your statement of purpose. Generally statement of purpose are from 300 to 500 per word, like of essay, that who are you and why you want to study this particular program in UK in general, and why that particular university specifically. Then you, after justification, you just have to talk about briefly or about your career goal, that after completing that particular program, what future you are envisaging. Then generally personal statement or motivation letter or the statement of purpose, these are the document like a more or less same. So whenever they ask about the statement of purpose, it's more about that what you will do after studying that particular program. When they ask about the personal statement, so it's generally more about your personal journey or something like that. And when you talk about the motivation letter, so it's generally combination of that statement of purpose or the personal statement. Then you require 2, 3, or maybe sometime more letter of recommendation, generally from your academic background. But if you have a work experience, so you can mix match that particular letter of recommendation from your professional employee or something like that. Some university required that PDF copy of LOR. So while you are applying, so you just need to upload that particular document. And some university ask for that mail ID of your professor or the recommender. So they will share a link and they have to write down. So you have to inform at least a month in advance to your person, that whoever going to write your letter of recommendation. So give them enough time, and it's better ask them to share a draft or something like that, that I may write a letter for you, something like that, so you can refine that particular letter and upload in on the portal. And make sure that you generally do the reminder to your letter of recommendation, because I know many people that who had very good potential to study abroad, but their letter of recommendation is not submitted during in a due time, and deadline has been passed and their application has been rejected because no submission of the letter of recommendation. And then you require the official or unofficial transcript. So generally official transcript, your university directly sends that particular transcript to the university, and unofficial one is like they will give you a transcript copy to you and you just have to upload that. Then you require the English language. So in English language, generally some college accept TOEFL, some college accept IELTS, some college has their own language criteria, something like that. So you have to go to the university website to check that what English requirement your college is required. You generally ask the college or the university for the way of the English requirement on the behalf of that you already studied undergrad program, where the medium of instruction and the examination was English. Then sometimes they required for the miscellaneous document like your certification, extracurricular activities, curricular activities. Maybe you design a website, maybe you organize a conference or something like that. So all the document goes in miscellaneous document. So this is kind of journal overview or the picture about that application of the university. And some university also need fees to application fees. So you can ask them to waive off that particular fees. So in my case, I asked the university fees waive off from the LSE. They generally give me a waive off for the application fees. But Oxford and Cambridge declined my request for the waive off. So I have to pay the application fees at the Oxford and the Cambridge also. So it depends, that kind of thing. And each and every university there has their own criteria for the selection. So that's why I recommended go through the profile of the previous student and try to acquire these kind of soft skills they have, and mention these skills in your CV, in your SOP, or kindly ask your recommendator to mention these skills in your letter of recommendation. So this is the overall picture. Shri, would you like to add something in that? Or I cover everything? Yeah, so just an addition. I mean, all these processes, ESRI process है.
और इस प्रोसेस में अगेन इट विल डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी, एज रियाजुल मेंशन दैट you may get waiver, English test waiver. So English test waiver is very expensive. India में भी 18,000 रुपए लगते हैं. It is very गारंटी नहीं difficult आपका to निकले pay. नहीं निकले. Exactly. For that you need a specific accent, specific मतलब थोड़ा तैयारी prepare करना होगा. तो as I mean most of the students here are from Aligarh Muslim University, and I can see, let me just check it whether it is being covered in any university or not. Somewhere I could see no. So earlier I saw that University of Edinburgh exempts some universities, some Indian universities from the English test waiver. If you are coming from that specific university, then they will waive off. आपको इंग्लिश टेस्ट की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में जाना चाहते हैं, तो उन्हें अंग्रेजी की आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली कुछ कुछ कोर्सेज जैसे स्वास में अगर आप अप्लाई करते हैं स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, देन आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज में दे में आस्क फॉर द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. सिमिलरली ट्रांसक्रिप्ट आप पीडीएफ अपलोड करेंगे, दे विल कंसीडर इट. बट एलएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उनको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए. मतलब आपके यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से ईमेल करवाना होगा उनके एक स्पेसिफिक कोड के साथ, ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए. बाकी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यस, इट शुड बी क्वाइट कंपेलिंग. व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, आपका बैकग्राउंड क्या है. सिमिलरली आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखें. सम यूनिवर्सिटीज विल आस्क फॉर 500 वर्ड्स ओनली, सम यूनिवर्सिटी में आस्क फॉर 800 टू 1000 वर्ड्स. तो आपको उसमें सारा कुछ मेंशन करना है कि 800 वर्ड में ही कैसे लिखना है. सम यूनिवर्सिटी में से दैट ओके 500 words. 2 pages of या 2 pages, 2 पेज में आपको बोलेंगे तो 2 पेज में सम टैक्टिक्स यू कैन अप्लाई, कि 2 पेज में आप ज्यादा वर्ड को कैसे आप ला सकते हैं, 1 पेज में ही ज्यादा वर्ड कैसे ला सकते हैं, अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें टैक्टिक्स हैं, बट यू नीड टू सी इट प्रॉपरली इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. हाँ, these days ChatGPT is there, use ChatGPT कि ChatGPT आपको बहुत सारा कुछ बताएगा. तो use all these necessary tools, but while writing your SOP, try to give your own experience, your own words, your emotions. That ChatGPT will not be able to do it, because कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ स्पेसिफिक टोन में लिखना होता है. Then yes, obviously your own sentences will be very much helpful for that specific things. And one more thing, I mean the universities that you want to see, try to open that QS website. You can see in the presentation that QS world ranking websites. So sometimes it is helpful as well कि चलो ठीक है ranking अच्छा है, it will definitely help us in future. But at the same time, some universities might offer the specificity that you want, and some university may not. So as for example, if somebody is interested in education and social justice, so I mean the course I am doing, I found it in very few universities, not in every universities. So I applied in such universities. Similarly, a specific demand you have, you can look over the specific universities, and yes, use ChatGPT, everything. Yeah, I think yes. Yeah. I think, yeah, but then, Riajul, do you want to add something? And kindly make sure that you write whatever in UK English. Don't use a US English. They are very, very, very specific about Yes. that. The spellings. Don't offend Exactly. people. Don't offend the Bhoti people, and And- kindly make it a academic neutral writing. Don't write like a action verb or something like that. Kindly make a neutral writing that Shishu has done something like that. Shishu was the leader. Shishu have done. Make it like that. Don't use in university application like that I did or something like that. Mention like the third person or something like that. But while you are writing for the Chevening, write it like that I did it. Because Chevening is more about like a leadership, scholarship, and university is more like academic setting. So both are like required a different writing style for that. So you have to be very specific about that. And one more thing that I was talking about. So, I mean, university application in UK is not very much difficult until and unless you are ready to research all these things. So I don't want to demotivate anyone, but yeah, I mean, don't think it is very easy and don't think it is very difficult.
I can bet if you're applying and if you're doing all this proper homework, if you prepare it properly, nobody will, I mean, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. बट द चैलेंज इज अबाउट स्कॉलरशिप. सो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन I can bet if you all are applying, I won't say 100% of the students will get, but yeah, more than 90% if you are following the proper procedure, properly writing what they are doing, I mean, what they are demanding, what they are asking, and you are following all these things, you will definitely get into the universities. Provided that if you are applying to very competitive courses, then you have to, I mean, you have to come out of the boundary so that they will select you, because there are many courses in different universities. They are very competitive, so you need to check how much, I mean, their acceptance rate is, what is their denial rate and everything, and properly you need to plan. You need to show their, you need to, prove your CV as well. So CV is one of the main thing I forgot to mention in this process. But yeah, CV is very Yeah, I mentioned about the thing. CV. Yeah, sorry. And especially I think Rajul bhai has taken session on CV, and maybe Atif will also plan something and any session on CV as well later on. So, But yeah, I would just like to add that as we were discussing, that we are just touching on the whole application process in this session, and the idea is that maybe we can have a particular session on SOP. To talk about SOP in detail would require another 1 hour. We might also Exactly. have to organize a session on on like how to navigate this LOR business and the other documents, like for example English requirement, because I have one. I know that if you go to the controller in the university or in most of the universities, you can ask them to give you a letter of language, so that they would probably issue you from both the department as well as from the controller that the student was enrolled in this program and the medium of instruction was English language. So we might have to organize some specific sessions for these specific requirements. We would definitely do that in the future, but for now let's just have a flavor of each of them. yeah, and now next I think since, I mean, it's a university process, and I will share this PPT with each and everyone. So I'll share it with Atif, and then you can circulate it to everyone by email. And then now after university processes, Riyajul, would you like to talk about the types of scholarships available for Indian students for the UK program? Yeah. Okay. Lovely. Because as I mentioned that I apply for 14 different university, and I also look for the different scholarships, because I am not a very kind of optimist person. I am very pessimist. So I try to increase my chances of something like that. So these are the scholarship like Commonwealth shared scholarship. So generally shared scholarship is shared by the university. So you have to apply at the university, and you have to mention that I want to be considered for the shared Commonwealth shared scholarship. And you have to apply for the Commonwealth shared application also separately, and you have to share that particular application with the university that I have applied for the shared scholarship, and university nominate you to the Commonwealth Council that I nominated this particular 5 candidates, and we have 2 seats. So generally they nominated 5 or 10 candidates based on the number of seats they have. So if you are lucky enough, so you will shortlist for that Commonwealth scholarship, shared scholarship. So in that scholarship, you don't need to be appear for the interview. So that's a good thing about, like in Chevening, you have to appear for the interview. Then there is another scholarship known as a Commonwealth Higher Education Scholarship. So every year, Indian government nominated 38 candidates from India to study abroad. So you have to apply for the Ministry of Education portal. So generally, application started from that 15th September and somewhere around January or something like that. But the catch is, for that scholarship you need an offer letter from your university. So you have to secure an admission from that university first. Then you can apply for the Ministry of Education India for Commonwealth scholarship. So this scholarship is not provided by Indian government; it's provided by that FCDO. That means UK government. But you have to
make sure that you have an offer letter from that and you applied for the Minister of Education portal. So is it more or less the question are same? So then the fourth one is known as a Joint Japan Scholarship. So Joint Japan Scholarship generally has several courses in different universities in UK as well as in 50 other countries. So you have to identify that which course you are aligned and you have to apply for the university Joint Japan Scholarship. University nominated for the Joint Japan Scholarship. Joint Japan panel conduct your interview and provide that particular scholarship. Then there are the several other scholarship like Rhodes Scholarship, like Cambridge Plus Scholarship, Gate Cambridge Scholarship. So these are the scholarship like that university provide at university level. It's not like that generic scholarship that you apply for the scholarship and you can study at any universities. So you have to identify that which university has these kind of scholarship. Like Edinburgh University has a great scholar scholarship. Future Leader Scholarship is offered by the Bristol University. Similarly, Sussex has like a Voice, something like that, scholarship. So every Chancellor Scholarship. Vice Chancellor Scholarship or something like that. So different universities have different scholarships. So it's not like that these are the full funded scholarships. Sometimes they fund your fees, sometimes they fund your 50% fees, and rest of the fees covered by you. And there is another scholarship which provides the trust which is established in India, known as a Shivdasani, Inlak Shivdasani Scholarship. So you can apply for that particular scholarship also. Then there is another scholarship which is run by the alumni of the Oxford and the Cambridge University, which is known as a OCIS scholarship, Oxford Cambridge International Scholarship Program, something like that. So you can also apply for that scholarship. So there are the many scholarships to study in UK. If I talk about the study in France, so there is the Charpak Scholarship, Marie Curie Scholarship, similarly DARD Scholarship in Germany, and Max Scholarship in Japan, Fulbright Scholarship in US. So different countries have different kind of scholarships. So you can look for that. Yeah. Yeah, so all these are scholarships, and we'll send a list of scholarships as well. So I'll update this PPT. There are One more thing. scholarships. Exactly, but for UK specifically, I mean, today we are focusing on UK, but you can check on a specific countries as well. Exactly. As Riajul mentioned about France. So, as for example, I mean, I know some of my friends who are in British STEM Women Scholarship. So, if somebody is here and who is doing natural sciences like physics, chemistry, biology, biotechnology, and XYZ, so there is one called British Council STEM Women Scholarship. So, it is specifically for women, I mean girls only. So you will be eligible for applying for it, and you will get fully funded scholarship. So if somebody is in sciences, kindly look for that British STEM Women Scholarship. Other than that, there are multiple scholarships, but these are very famous: Commonwealth, Chevening, Rhodes. All these are very famous scholarships, and it is for for all these courses, there is no specificity in that. I mean, it could be for economics, there is one more chemistry, scholarship biology. like NIS scholarship also. NIUS? No, NOS, yes. So there is one more scholarship, NOS, National Overseas Scholarship. It is given by the government of India. So if someone is coming from SC community or ST community, so SC scheduled caste, then you are eligible for that, and they also pay some money. So there are some state specific scholarships. So there are some states like Jharkhand government Marang Gomti Overseas Scholarship. So it is for SC, ST, OBC, and minorities. So I mean Muslim minorities. So if somebody is coming from Jharkhand, you are eligible. There is scholarship in Rajasthan government. So if anyone is from Rajasthan state, you have massive number of scholarships. They send 250 students every year, and there is no competition because seat is this. I mean, seat is more than 250, and applications they are getting is less than 200. So just check about Rajiv Gandhi National Overseas Scholarship around in Rajasthan. Similarly, in Tamil Nadu also. If somebody is coming from Maharashtra, yes, there is massive number of scholarships as well. So there it is for SC, ST, OBC, minority, and general categories students as well. So kindly check all these things, whichever state you are coming from, and they pay good amount. Yes.
Now I think shall we go to Chevening specifically or what? Any other question related to the university? Yeah. So is there any Atif? Can you filter out some questions on university specifics in the chat box so that we'll try to Yeah, cover it? I mean, yeah, I think most of us has already been touched, but I think we can just go on and talk about Chevening in more details, and then at the last we will open the Q&A session, Yeah. and maybe we'll Sounds see. fine. Sounds good. Yeah. So let me go to the Chevening thing. Yeah. So really, would you like to Okay. introduce this? Yeah, perfect. So, Chevening Scholarship is established around 40 years back by Chevening House. So, it is an international house for the diplomatic relationship of UK with the other countries. So, in this particular scholarship, around 170 countries people are participating, not like Commonwealth. So, in Commonwealth, 72 countries people are participating. So, Commonwealth is not that hard to crack because all the participants are from developing countries. But in Chevening, you have a competition with developed country people also, more than 150. So you have to make sure that why UK government invest around 50 lakh rupees or 70 lakh rupees or 1 crore rupees on you, depending on your university which are you aiming for. And one of the best thing about Chevening scholarship, which I like, is alumni network. Very strong, very helpful. So whenever you reach any Chevener over the LinkedIn or the mails, they will respond to you whenever they got the time. So they are very helpful in mentoring, connecting with other people, or sometimes organizing house party or something like that. So the eligibility criteria this year little bit changed. So during my time, so they required a 2 years work experience with your bachelor's degree. So it doesn't matter that during your bachelor's you working as a volunteer and you have met the certain number of hours, so you can apply for the Chevening scholarship. But this year they comparatively make very clear, very specific that you required a post-study 2 years work. Post-study. So when you completed your undergrad degree, whenever you completed that, so after that you required at least 2 years full-time work experience, full-time. Okay, so this is the basic eligibility criteria for the Chevening, and you have to mention around 3 university and the courses, either 3 courses from the same university or the same courses from 3 different universities. So you mention that about that, and you have to fill the application form. In application form, you does not need to provide any document right now beside the passport or the essay question or something like that. You don't need to provide like transcript or anything at this stage. Yeah, so that's the thing about the Chevening. So can we go to the first question, or you would like to add something? Yeah, just I mean in the eligibility part, I would say, I mean, see, this is overview that we are giving here. It would be really amazing if you go to the website Chevening. It Very is very pronounced as Chevening, not Chevening. Just go through the website. Website is very helpful place because I mean the number of times you'll go through the website, you'll get to know the essence of the specific scholarships. So Chevening is again, I mean, if you go to the LinkedIn, check about Chevening, they'll be writing a lot of things about Chevening. I got to do this. I mean, so many things. So let me, I mean, just clear one more thing here that this specific scholarship is not a specific for any specific course. This is for any course you want to do. If somebody wants to do in commerce, arts, X, Y, Z, somebody is interested in maybe any. Can you tell me any course that is we haven't heard of? So generally, Chevening does not fund about MBA. Don't apply for the MBA with the Yeah, Chevening. but less. But They only fund 20,000, sir. yeah, something like that. Don't aim for the MBA. You can aim any other course beside the MBA. Any Yeah, course. whatever And you just name it, they have it. It's like that. yeah. You just name it that particular field. So I this year I met one of the Cheveners who is going to a part. So I was thinking that I asked that what course you are going to study. So she mentioned that I am going to study the currents. मैंने कहा the electricity करी no the sea currents. मैं कहा oh amazing. So they have that kind Yeah. of course also. So she mentioned yeah I am working on the sea currents. मैं कहा oh amazing. So it's like Exactly. that.
Exactly, and just an addition, if somebody, imagine Atif wants to study maritime economics, ठीक है, Yeah. or he wants to study something like some XYZ economics, aerospace economics. I mean, how I mean money is being put into space science or something. There are courses available here, so that doesn't matter. Chevening is for every courses except MBA. In MBA, there will be capping amount, so you need to pay by yourself. So You have to pay around just 50 lakh rupees beside Yeah. that, at least. so just go through the website thoroughly, Chevening website thoroughly. You will get each and every answer over there. FAQ section, because we don't have proper time right now, so we cannot be able to. But yeah, we'll covering the main parts of the Chevening. So first question, let's start with the first question. I mean, see, if you want to be qualified for Chevening, if you are covering all these criteria, the eligibility criteria, you need to write बताओ बाहर कैसे जाना है sorry. Excuse So me. Can you please remove me? Yeah, so sorry for that. Listen. yeah, no worries. So there are 4 essay questions. You need to write 4 essay, and that should be very compelling, because almost 1,100,000 students across the world, they'll be applying for this scholarship. So your essay should be very compelling, so that the selection committee will be selecting all these essays. So read the questions carefully. First one, they're writing that Chevening is looking for individuals who will be future leaders. As earlier I mentioned, that Chevening is looking for someone who have leadership quality and will become a leader in the future career, or influencers in their home countries. Explain how you meet these requirements using clear example of your own leadership and influencing skill to support your answer. So in essay 1, you need to write answers on your leadership quality, why you consider yourself a leader, and you need to give at least 1 or 2 instances. It means you need to give one example. Imagine Atif is conducting a meeting today to aware students on higher education abroad. So it's a leadership quality that he is doing right now. So he can use this example as a leadership quality, providing that I have this kind of leadership quality, मेरे अंदर में ये नेतृत्व क्षमता है और मैंने ये काम किया है. तो उनको एक मिनिमम, कम से कम एक ऐसा घटना को उन्हें बताना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ये काम किया है, इसलिए मेरे अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए मुझे सेलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि ये जो पैसा देंगे यूके गवर्नमेंट, आप जो लीडर बनने के लिए पैसा देंगे, और आप कुछ ना कुछ अपने एरिया में आपका कुछ काम होना चाहिए, जो भी फील्ड है. इट कुड बी एनीथिंग, स्टूडेंट एक्टिविज्म, आप यूनिवर्सिटी में इमेजिन करिए आपने एक स्ट्राइक करवाया जिसमें मेस का खाना अच्छा हो गया, दैट इज ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी. जैसे आपने कोई प्रोटेस्ट करवाया, इमेजिन करिए इसमें से कोई मास्टर्स के स्टूडेंट हों, वो सीए आंदोलन में एक्टिव थे, दे कैन ऑल्सो राइट ऑल दिस थिंग्स एज वेल. जैसे मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटी में लिखा कि यस, व्हेन आई वाज इन माय एमएससी, मैंने प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट करवाने की वजह से क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में सेशन जो लेट होता था, 3 साल का डिग्री 4 साल में होता था, मैंने उसे कम करवाया, 3 साल में ही करवाया. सो इट कैन बी एनीथिंग. एनएसएस का कोई लीडर है, यू कैन ऑल्सो राइट दैट कि एनएसएस में आपने 3 साल इसको लीड किया एंड XYZ चेंजेस हैपेंड, आपने करवाया, आपकी वजह से ये हुआ. सो इट कुड बी एनीथिंग. सो जस्ट रिमेंबर. और वन मोर थिंग, यू हैव ओनली 300 वर्ड्स टू राइट दिस स्पेसिफिक एसे. तो 300 वर्ड में आपको क्लियर करना है. पिछले साल हमारे समय तक 500 वर्ड का था, बट दिस टाइम दे हैव रिड्यूस्ड इट. 300 वर्ड में ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं. सो दिस इज वन ऑन लीडरशिप क्वालिटी. डू यू वांट टू ऐड समथिंग, रिया जी? या तो जो भी है आप अपना एग्जाम्पल ऐसा दें कि जो यूनिक के साथ में ना एम्पैथी को शो करता है. इट डजंट मैटर कि लीडर का आपका आउटकम क्या निकला, जो भी है, ठीक है. तो आप एग्जाम्पल कुछ ऐसा दें जो 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 वाकई में दिखाता हो कि आपने कुछ लाइफ में किया है, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल. So that's about the more about the leadership. And leadership does not mean about that आपने झंडा उठाया और स्ट्राइक करने चल दिए. लीडरशिप किसी और चीज में भी हो सकती है, ठीक है. कई AMU के हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये बात बता रहा हूँ क्योंकि AMU और JNU और जामिया झंडा उठाने के लिए बहुत फेमस है अपनी कंट्री में, बहुत ज्यादा. सो आप दूसरे एग्जांपल भी दे सकते हैं लीडरशिप में. मे बी आपने कोई असेंबली, पॉलिटिकल पार्टी, रैली अगर वो करा है तो वो तो लीडरशिप में जनरली बहुत मेन स्ट्रीम एग्जाम्पल है. पर लीडरशिप में आपने कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है,
ठीक है, वो भी एक लीडरशिप में आपने इनिशिएट करा, आपने अपने डिपार्टमेंट को प्रपोज करा कि मैं एक स्टूडेंट का मे बी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना चाहता हूँ, मैंने एक एक्सपर्ट से बात करी, तो वो भी आपको एक लीडरशिप में हो गया। मे बी आपने मेस का खाना ठीक कराया, वो भी आपको एक लीडरशिप हो गया। मे बी कहीं पे बाढ़ आई और आपने 10 लोगों को इकट्ठा करा और खाना बांटने चले गए, या कोविड के टाइम पे आपने कुछ ऐसा काम किया, तो वो भी आपको एक लीडरशिप हो गया। मे बी आपने कोई एक प्रोजेक्ट किया, तो उस प्रोजेक्ट में आपने अपनी टीम को देखा कि वो बहुत बिखरे हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, आपने उनको कंडक्ट किया, कलेक्ट किया और कुछ एस्टेब्लिश किया। और मे बी आप अपने कोई स्टार्टअप आपने एस्टेब्लिश किया और आपने 4 डिफरेंट फील्ड के लोगों को लाके साथ में खड़ा करा उस स्टार्टअप में, और वो स्टार्टअप में 50 लोग, 100 लोग या 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपको एक लीडरशिप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि कैसे आप क्रिएटिवली और 300 वर्ड्स में आप उस बात को पुट करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास में स्पेस बहुत लिमिटेड है और आप उसमें एक भी वर्ड एक्स्ट्रा लिखकर अपने स्पेस को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो कमर्शियली कॉस्ट करने वाला बहुत ज़्यादा। और ट्राई करें कि आपका जो पहली लाइन हो ना बहुत कैची और वैसी हो कि बंदे को पढ़ने का आगे मन करे, क्योंकि 1 लाख के आसपास एप्लीकेशन आनी है जैसे शिशु ने मेंशन किया, और 1000 लोग ही हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, तो आपने अगर पहली लाइन इतनी बोरिंग है, इतनी बहुत जेनरिक लिख दी कि सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है जो रीड कर रहा है, तो वो आपको फुल होल हार्टेड या पूरे मन से पढ़ेगा नहीं, और जब वो पूरे मन से पढ़ेगा नहीं आपका ऐसे को, तो आपकी स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो आपको रिजेक्ट मार देगा स्टार्टिंग में। भले ही आपकी मेरिट कितनी अच्छी हो, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में वो कुछ मिला हो, आपने बहुत सारे अवार्ड जीत रखे, डजंट मैटर अगर आपका ऐसे ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो 4 क्वेश्चंस हैं यही आपका मेजरली डिसाइडिंग फैक्टर है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो ट्राई करें कि आप जो भी लिखें बहुत 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 ना इंडिजिनस स्टोरी हो आपकी, जो कनेक्ट करे लोगों को, और कैसे आप क्रिएटिवली लिख रहे हैं। तो आप लिखने के बाद में खुद पढ़ें, फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी को पढ़ाएं, फिर अपने किसी फ्रेंड को पढ़ाएं, फिर अपने किसी एक दुश्मन को पढ़ाएं, ऐसे दुश्मन को जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करता हो, बहस करने को आ जाता हो, जो आपके काम को बिल्कुल पसंद ना करता हो, हमेशा कमी निकालता हो, तो वो ना उसमें 1-2 कमी निकाल के लिए आएगा जो जेन्युइनली कमी होगी, पर आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राई करें ये वाला स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करने का, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका। कुछ और चीज़ आपको ऐड करना है? नहीं, सो यस, जैसा आपने बताया कुछ भी हो सकता है। आपने गांव में ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये भी लिखा था कि गांव में मैंने नरेगा पे काम करवाया था कोविड के समय में, और मैंने तीन प्रोजेक्ट मैंने करवाए। 3 प्रोजेक्ट कितने का होगा? 2-3 लाख का होगा बस। गांव में लोगों को मैंने, जब उस समय सब, अब जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे गांव के लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं, कलकत्ता, बैंगलोर, ये सब जगह पे काम करने जाते हैं, वो मतलब डेली वेजेस लेबरर्स हैं। वो जब कोविड में लौट के आ गए तो मैंने नरेगा में काम करना स्टार्ट किया, और मैंने एज ए मजदूर भी काम किया है। सो यू कैन इमेजिन कि मैंने भी मजदूर की तरह काम किया है, और गांव में लोग भी हमारे साथ आए, उन्होंने भी काम किया, उनको पैसे मिले। सो इट कैन बी एनी एग्जांपल, दैट डजंट मीन, अब जैसे इफ somebody is planning to study chemistry, तो वो बोलेंगे नहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल देना है क्या? नो, लीडरशिप कैन बी इन एनी फील्ड, योर सब्जेक्ट कैन बी इन एनी फील्ड। अगर दोनों साथ में एक ही एरिया में आ रहा है, दैट इज वंडरफुल, वो कॉम्बिनेशन वुड बी वंडरफुल। जैसे मैंने एजुकेशन का एग्जांपल दिया था कि आई हैव डन एक्टिविज्म इन एजुकेशन फील्ड, लीडरशिप इन एजुकेशन फील्ड, एंड आई एम गोइंग टू स्टडी एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस। तो ये मेरा एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया था। दैट डजंट मीन वही होना चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग। सो जस्ट, बट योर राइटिंग इज वेरी मच important. Now it would be better if we move to the next question on relationship building and shared learning. Yeah. So relationship building is like that, how you are creating a networking with the people, you are connecting, and how you are maintaining that particular relationship. So again you need to give an example. So आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो कि मेरे कॉलेज में एक्सपर्ट लेक्चर था, कोई एक एक्सपर्ट को दिल्ली से बुला के लेक्चर दिया, मैंने उसको फिर बाद में दिल्ली गया, मे बी उसको ऑफिस विजिट करा, उससे कनेक्ट किया, और उनसे मैंने फिर अपना डिसर्टेशन का प्रोजेक्ट डिस्कस किया, उन्होंने बोला आप ये कर सकते हो। तो दैट्स आल्सो अ नेटवर्किंग एग्जांपल। आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपने एक फ्रेंड के नेटवर्क को कनेक्ट करके कहीं एक एनजीओ में फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया। तो आप कुछ भी एग्जांपल इसमें दे सकते हो। मैंने अपना नेटवर्किंग में 3 एग्जांपल दिए थे। एक मैंने अपना नेटवर्किंग का, रिलेशन बिल्डिंग का एग्जांपल ये दिया था कि जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा कि मेस का फूड जो है बहुत वेस्ट होता है। तो मैंने स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया और कलेक्ट करके उनको एक चीज़ बोला कि मैं आपको एक नेटवर्क बना रहा हूँ कि आपको ये जो फूड है डिस्ट्रीब्यूट करना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 40 किलोमीटर के रेडियस में, आसपास में जितने भी होमलेस पीपल हैं, आप इसमें ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और इस चीज़ को मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं रखा, जब मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में गया
तो मैं उज्जैन में अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने जितने भी रेस्टोरेंट थे 11 बजे विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रात को बुलाता था। 11 बजे वहाँ पे जितना खाना बचा होता था रेस्टोरेंट में, बंद करा के रेस्टोरेंट को, वो सारा खाना रेलवे स्टेशन या जितने भी मंदिर में दर्शन करने लोग आए हुए होते हैं, जनरली पूरा बैकग्राउंड के होते हैं, उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा देता था। तो ये आप अपने नेटवर्किंग बिल्डिंग भी बता रहे हो और साथ में आप ये बता रहे हो कि आपका उससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी में। मैं एक चे गवेरा की लाइन को ऐड करना चाहूंगा। चे गवेरा की एक बहुत प्यारी लाइन है जो मेरे को लगती है अच्छी है बहुत। तो चे गवेरा ने बोला था कि यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर समवन। ठीक है, आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते बट किसी एक की दुनिया बदल सकते हो। तो आपको अपने इसमें एग्जांपल में वही देना है कि आपने किसी एक की दुनिया कैसे बदल दी या आपकी किसी की वजह से दुनिया कैसे बदल गई। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ में थे और कोई फिजिक्स का प्रोफेसर आया और उससे आपने नेटवर्किंग में डिस्कशन करा और आपको अपना पैशन जो है फिजिक्स में मिल गया, मे बी आर्ट्स में मिल गया, तो आप वो भी अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग में दिखा सकते हो कि किस तरीके से एक बंदे से कनेक्ट करने में आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। तो आप इसमें कुछ भी एग्जांपल डाल सकते हो और जनरली ट्राई करना कि रिलेशनशिप बिल्डिंग आपको और लीडरशिप दोनों एक दूसरे से इंटर लिंक्ड हो तो ज्यादा बेटर है। तो क्योंकि दोनों हैंड ऑन हैंड जाता है, जहां आप रिलेशन बना रहे हो लीडरशिप लोगे ही लोगे, और लीडरशिप लोगे बिना रिलेशनशिप के लीडरशिप काम ही नहीं करती है। तो दोनों एग्जांपल आपके एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। Exactly. So just to an addition, try to quantify, always try to Yeah. quantify कि आपने 10 लोगों की जिंदगी चेंज करी, आपने 50 लोगों की करी, आपने एक की करी, कितने पैसों की करी, कि आपने मे बी फंड जनरेट करा और फंड जनरेट आपने 10 लाख का करा, आपको इक्विवेलेंट बताना है वहां से यूके के इक्विवेलेंट में वो कितना है 10 लाख रुपए, क्योंकि जनरली वहां पे लाख करोड़ नहीं रेफर करते, तो वहां पे 1000 मिलियन और बिलियन में बात होती है। तो आपको उनकी वो लोकल लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करना है कि उनको रिलेट करना है, क्योंकि जनरली मे बी वो आपके लिए हार्डशिप हो, उनके लिए वो हार्डशिप नहीं है। क्योंकि मेरे बैच में एक प्रोफेसर की हार्डशिप हुई थी, उसकी ट्रेन जो है 3 घंटा डिले हुई। अब मैं उस भाई को क्या बताऊं कि हमारे यहाँ हार्डशिप में हमारे यहाँ तो ट्रेन कैंसिल हो जाती है, सीट पे जगह नहीं मिलती है। एक ट्रेन हमारे यहाँ 6 महीने बाद पहुंची है, जो बंगाल से चली थी बिहार पहुंचनी थी, 6 महीने बाद पहुंची है ट्रेन, इतना डिले। और वो 3 घंटे पे रो रहा था कि आज मैं मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था, ऐसे आके क्लास को बता रहा है टुडे इज माय वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैंने कहा भाई 3 घंटे डिले होने पे किसी का दिन कैसे वर्स हो सकता है। तो आपको लोकल लैंग्वेज में भी ट्राई करना है कि उनके इडियम्स यूज करने हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के इडियम्स होते हैं। तो जनरली ट्राई करें जब आप लिख रहे हो ये चीजों का, कि जो भी पढ़ रहा है वो ब्रिटिशर्स होगा, एंड ऑफ द डे इंडियन नहीं होगा आपका रीड करने वाला मोस्ट प्रोबेबली। एग्जैक्टली और इसमें स्टोरी अपनी आपकी अपनी स्टोरी जब झलके ना, तो आप बताएं कि दिक्कतें क्या आपकी हुई है। जैसा उन्होंने बताया कि आप जैसे इमेजिन करिए समबडी इज कमिंग फ्रॉम बिहार का किशनगंज का एक ऐसे गांव से जहाँ पे बाढ़ पीड़ित है, आपने एएमयू में रह के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ करवाया, तो कॉन्टैक्ट आपने इस्तेमाल किया, वो बताएं। एज फॉर एग्जाम्पल इमेजिन आतिफ कैन राइट कि आतिफ ने 15 ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज कराए हैं जिसमें 1000 स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ। उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें मान लीजिए रियाजुल भाई हमसे और भी XYZ लोगों से उन्होंने बात करी और आप लोगों के लिए इन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ नेटवर्किंग स्किल वाले एग्जांपल में। और उसकी वजह से इमेजिन करिए कि आप लोगों में से इमेजिन राइट नाउ वी आर 60 पीपल ओवर हियर, आउट ऑफ 60 imagine only 10 people are just going to abroad for their master study, they got fully funded scholarships, partially funded scholarships, so it can also be used as an example. तो it can be anything, बस आपको ये जानना है कि आपको जानने वाले कितने लोग हैं, आपने उनका इस्तेमाल करके आपने कोई काम बनाया किसी के लिए। सिंपल शब्दों में यही है, इसमें ज्यादा कोई बड़ा इसमें कुछ नहीं है। सो एंड ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लेन कि आपके लिए नेटवर्किंग स्किल क्या है। मतलब फॉर मी नेटवर्किंग स्किल ऐसा चीज है कि जो लीडरशिप क्वालिटी के लिए इसेंशियल स्किल है, जिसमें हम डिफरेंट एक्सपर्टीज को एक साथ हम लाते हैं और एक किसी भी काम को हम आगे बढ़ाते हैं और वो काम स्पीड हो जाता है। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो दिस इज नेटवर्किंग स्किल एंड यस यू नीड टू बी अ गुड नेटवर्कर, गुड रिलेशनशिप बिल्डर, you should have very good social skill to be a चीवनिंग स्कॉलर। और आप जब चीवनिंग स्कॉलर से मिलेंगे ना तो वो ज्ञान बांटने में काफी तेज होते हैं, मतलब नेता, एक टाइप का नेता है अपने फील्ड में, तो ऐसा होता है। एंड लीडरशिप क्वालिटी डजंट मीन कि पॉलिटिकल साइंस वालों का ही होगा, ये केमिस्ट्री वालों को भी होगा, आर्किटेक्चर वालों को भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स वालों को भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई थिंक अभी तक चीवनिंग स्कॉलरशिप ने 50 प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज को।
50। एंड along with that not just prime ministers, बहुत सारे ऐसे जैसे बड़े बड़े डिफरेंट एमयू नीचे के पोजीशन के भी नहीं है, लीडर। मैं टॉप पोजीशन बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। आप समझ सकते हो, आपको वो शो करना है कि आप में वो कैपेबिलिटीज है। एंड वन एग्जांपल जैसे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कोई कौन सा मिनिस्टर है अभी, पेट्रोलियम एंड ऐसे कुछ। हाँ, वो ही भी इज अ चीज चीफनिंग स्कॉलर। अपना अमिताभ कांत जो नीति आयोग का सीईओ था, वो भी चीफनिंग स्कॉलर। बिहार में जितने लोग होंगे, बिहार में एक मिनिस्टर है कोई, नीतीश मिश्रा आई गेस, या वो भी चीफनिंग स्कॉलर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी। मतलब सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन अ चीफनिंग स्कॉलर, क्योंकि 1984 से जब स्टार्ट हुआ तो हर साल जाते हैं और वो किसी ना किसी फील्ड बांग्लादेश में। का जो अभी चीफ एडवाइजर है, मतलब एक्टिंग पीएम, यस, इज आल्सो चीफनिंग ग्लूकोज स्कॉलर। एग्जैक्टली, मोहम्मद यूनुस। हाँ, मोहम्मद यूनुस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना प्रेस्टिजियस है। और इसमें इंडिया से हर साल ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, कोई एनजीओ के मतलब एनजीओ के फाउंडर्स आते हैं। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लीज गो अहेड। Yeah, would you like to take it forward? हाँ। या सो जनरली एप्लीकेशंस का तो हमने बता दिया था, बट अब आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मैं वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना चाहता हूँ मास्टर्स। अब इसको जस्टिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अगर तुमने बोला कि हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है, तो आपकी पर्सनैलिटी शो करेगी कि जिस थाली में खाता है उसमें छेद कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपको अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करना है अननेसेसरी, जहाँ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आईआईटीज हमारे, पूरी दुनिया को पता है कि आईआईटीज हमारी क्या कैपेबिलिटीज रखते हैं। ठीक है, तो आपको वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना है कि वो कोर्स वहां पे क्यों। तो उसके लिए उस कोर्स के मॉड्यूल में जाना और वो मॉड्यूल बताना है कि ये जो मॉड्यूल आप पढ़ा रहे हो ना, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को इस मॉड्यूल की वजह से आना, सिर्फ कोर्स की वजह से नहीं आना। मे बी या कोई प्रोफेसर जिसको आप एडमायर करते हो उस डिपार्टमेंट में, वो कोर्स पढ़ा रहा है, तो आप उसको कोट कर सकते हो कि ये जो है मेरा ये रीजन था, इस वजह से मैं यहाँ करना आना चाहता हूँ। मे बी मैंने 2 साल जो वर्क किया, वर्क करने के बाद में मेरे को लगा कि मेरे को अपना फील्ड ऑफ स्टडीज चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। जनरली शेवनिंग जो है अपनी वेबसाइट में लिखता है कि वो सेकंड मास्टर्स के लिए पैसा नहीं देता है। ठीक है, बट अगर आपके पास में जस्टिफिकेशन हो, तो मेरा केस है कि चौथे मास्टर्स के लिए वो पैसा दे रहा है। ठीक है, तो आपको जस्टिफाइड करना है कि आपको वो मास्टर्स क्यों करना है और वहां से क्यों करना है, उसका रीजन क्या है। तो वो एक बहुत 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 क्रूशियल पार्ट है। तो आपको उसको बहुत रिलेटेबल बनाना है। आपको मे बी आप एग्जांपल दे सकते हो कि आप अंडर ग्रेड में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और जो ये पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है आपकी लर्निंग को। मे बी आपने फील्ड में कुछ काम किया, वो काम की वजह से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने का जरूरत महसूस हुआ, इसलिए आप पढ़ने जा रहे हो। मे बी अभी वर्क की जरूरत है, वो फील्ड नहीं आई है और इंडिया में भी डेवलप नहीं है, इस वजह से जाना चाहते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ना चाहते हो, तो आप उसमें बहुत अच्छी चीज क्या लिख सकते हो पब्लिक पॉलिसी में, कि मैं यूके में आके पब्लिक पॉलिसी इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यूके में लोग जो है डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों से हैं। मोर देन 150 कंट्रीज के मेरे को लोग मिलेंगे वहां पे पढ़ने के लिए साथ में। तो मैं उनकी कंट्री से समझूंगा कि वहां पे क्या पब्लिक को इश्यूज आ रहे हैं और क्या पॉलिसीज बना के रिफॉर्म लाया जा रहा है। तो मेरे को एक ग्लोबल स्टेज मिलेगा लर्न करने के लिए। जब मैं इंडिया वापस आऊंगा तो उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो आपको वो भी दिखाना है कि आपको वापस इंडिया आके क्या करना है, उसके बाद में उस एजुकेशन का क्या बेनिफिट है और स्टीवनिंग का क्या बेनिफिट होगा, वो आपको इनडायरेक्टली दिखाना है। तो उसमें आपको मे बी कोई पॉलिसीज डाल देनी है कि यूके की इंडिया के साथ में, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यूके सोलर अलायंस को अपने में कोट किया था 2035 कि यूके गवर्नमेंट 100 बिलियन पाउंड जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला सोलर अलायंस में। एज एन आर्किटेक्ट सोलर्स में मैं काम कर रहा हूँ, तो इट इज अ गुड थिंग कि हाउ आई कैन बिकम अ निगोशिएटर बिटवीन इंडियन एंड यूके गवर्नमेंट। while studying in UK मेरे को यूके का एजुकेशन सिस्टम पता है, while लिविंग एंड स्टडिंग इन इंडिया मेरे को इंडिया की वर्किंग कंडीशन पता है। तो मेरे से बेटर कौन होगा निगोशिएट करने वाला इस पॉलिसी पे, अगर मेरे को ये एजुकेशन मिल जाती है। तो आपको उस तरीके से रिलेट करना पड़ेगा कि कैसे वो एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से पढ़ना, और उसी कॉलेज से पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूके में सेम कोर्स आई बिलीव मोर देन 50 यूनिवर्सिटी में होगा, तो आपको यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफाई करनी है कि वही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी क्यों। तो इससे ये पता लगेगा कि आप अपने ना डिसीजन में कितने कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि सामने वाला आपको 50-60 लाख रुपए या करोड़ रुपए देने वाला है, वो फ्री में तो देके जाएगा नहीं जब तक वो आपसे पूरी तरह कन्विंस नहीं होगा।
तो आपको बहुत स्पेसिफाई करना है, और उसमें एक और चीज स्पेसिफाई करनी है कि आपके पास में सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स क्या है उस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। ठीक है, तो आप आइडियल कैंडिडेट उस प्रोग्राम के लिए कैसे हैं, तो आप बता सकते हो कि मैं जिस जगह जॉब कर रहा हूँ वहां पे जो है एसपीएस पे काम होता है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम होता है या इस चीज में काम होता है, और ये प्रोग्राम जो है डिजायरेबल स्किल्स बोल रहा है कि अपने में कि डिजायरेबल स्किल्स ये है। तो ये जो स्किल्स है मेरे को हेल्प करेगा कि जब मैं क्लासरूम में जाऊंगा तो डिबेट कर सकता हूँ हेल्दी, जिससे लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो इंडिया के बारे में और मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो ग्लोब के बारे में कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल नॉर्थ क्या कर रहा है, ग्लोबल साउथ क्या कर रहा है उस प्रोग्राम में। तो आप उस तरीके से कैसे को रिलेट कर सकते हो चीजों को, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। पॉलिसी हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, और मॉड्यूल हो गया और प्रोफेसर हो गई। ये चार चीज में आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत मोर देन 250 वर्ड और 300 वर्ड में आप ही डिफाइन कर पाएंगे इन चार चीजों को। शिशु कुछ ऐड करना है आपको? Yeah, I mean, I think yeah, 3 different courses, तीनों कोर्स आप ले रहे हैं तो जस्टिफाई करिए जितना रियाजुल भाई ने बताया, दैट इज मोर देन एनफ। बट हाँ, वही 301 में कैसे वीव करना है, यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आपको दोस्तों की भी मदद लेनी है, अगर अच्छे कोई अंग्रेजी में अच्छे हैं तो कंटेंट, आई मीन इंग्लिश विद कंटेंट। कई बार क्या होता है कि हम इंग्लिश जार्गन्स काफी इस्तेमाल करते हैं बट कंटेंट उसमें नहीं होता, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंग्लिश भी होना चाहिए एंड कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो बस यही है, और इसमें और क्या, हाँ मतलब ये कुछ भी हो सकता है कोर्स, जैसे रियाजुल भाई ने बताया कि इट कैन बी एनी कोर्स। आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हाँ, कोई केमिस्ट्री पढ़ने जा रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ने जा रहा है, तो फिजिक्स यूसीएल में क्यों करना है। अगर मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, तो भाई उनका एक स्पेसिफिक मतलब ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे अच्छा टेलीस्कोप है। कैम्ब्रिज में फिजिक्स क्यों पढ़ना है, तो भाई बहुत अच्छा ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से जहाँ पे किसने काम किया था, तो स्टीफन हॉकिंग ने काम किया, बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने काम किया। तो उस लैब में आपको काम करने का मौका मिलेगा, एंड यू वांट टू डेवलप सच काइंड ऑफ लैब्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया आएंगे तो आई मीन यू शुड शो दैट यू आर विजनरी एज वेल। विजन होना चाहिए कि आप वहां पढ़ के आएंगे तो एक लीडर की तरह काम करेंगे, एंड चीवनिंग तभी आपसे वो कन्विंस होगा। तो दिस इज स्टडिंग इन यूके पार्ट। Other than now, next we will be moving to the career plan because we have short of time and we are moving beyond time. 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो we will try to wrap it up within 5 minutes. तो career plan, shall I continue? Yeah, please continue. So in career plan, see, Chevening is leadership based again scholarship. So you need to show that you are a visionary leader. You have some plans because leaders has a plan. I mean उनके पास एक proper plan होगा, time bounded plan होगा। तो आपको इस 300 वर्ड में, अगले 300 वर्ड में ये दिखाना है कि चीवनिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या करेंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2-3 पार्ट्स की शॉर्ट टर्म, मतलब आपको टाइमलाइन भी दिखाना है कि कंप्लीट हुआ कोर्स, उससे 2 साल के बीच में आप XYZ काम करेंगे, अगले 3 से 8 साल के बीच में आप XYZ काम करेंगे, जो कि प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। मतलब आपके पास वो प्रॉपरली क्या कहते हैं मतलब कैलकुलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप आएंगे और जैसे मैं बोलूंगा कि नहीं मैं आया और मैं HOD बन जाऊंगा अपने किसी यूनिवर्सिटी में। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। HOD बनने के लिए यू शुड हैव प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर XYZ एंड देन यू विल बी प्रमोटेड टू HOD लेवल ऑफ आई मीन रैंक। तो ये आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए। And then you have to define all these things in 300 words. And along with that, it is very important कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उससे लिंक्ड होना चाहिए। You cannot say कि आपने कोर्स XYZ किया and you are doing something else. It's not possible. आपको वो जस्टिफाई करना हो कि आपने ये कोर्स किया, उसके रिलेटेड चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी कोई पढ़ने आ रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया, तो आपको ये भी दिखाना है कि आप जब यहाँ से लौटेंगे तो उस फील्ड में आप काम करेंगे एंड मतलब अगेन लीडरशिप पोजीशन पे ही काम करने वाले हैं। तो ये करियर प्लान प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। इसमें या रियाजुल भाई अगर आप ऐड कर दें तो बढ़िया हो जाएगा। इसमें भी आप पॉलिसी जरूर ऐड कर देना, यूके और इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट जरूर लेकर आना। हर कोई सस्टेनेबिलिटी को आज के टाइम पे बेच रहा है, तो SDG डाल देना, INI डाल देना, कैसे भी ऐड कर देना अपने में। बस मेन ये चीज है। और आप अपना एडुकेशन, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस और जो आप यूके में पढ़ने जा रहे हैं तो उसको रिलेट करते हुए फ्यूचर प्लान बनाना। ऐसा ना हो कि आप पढ़ कुछ और रहे थे, आपका अंडरग्रेड कुछ और था और फ्यूचर प्लान में आप कुछ और खिचड़ी पका रहे हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहा। और बहुत हाइपोथेटिकल मत होना कि मैं आके दुनिया चेंज कर दूंगा और मैं सिस्टम बदल दूंगा। नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एग्जैक्टली रियलिस्ट, बी रियलिस्ट।
लेकिन एक चीज ये भी एम्बिशियस भी, मतलब ऐसा ना हो कि एम्बिशियस ना हो। एज फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, एम्बिशियस होना चाहिए। हाँ, कि मैंने लॉन्ग टर्म में लिखा है कि आज से 15-20 साल के बाद मतलब आऊंगा, ये काम करूंगा, और 15 साल 20 साल के बाद मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनने की चाहत रखता हूँ, मतलब आई हैव एन एम टू बी एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, एस्पिरेशन। मैंने लिखा है। तो लेकिन ये नहीं लिख सकता हूँ कि 5 साल के अंदर ही मैं हो जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट 20-25 साल मैंने लिखा है। तो या आई एग्जैक्टली। मीन ये करियर प्लान। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट में, कुछ हाँ बेसिक आपस क्वेश्चन में है, देन क्वेश्चन एंड। बस खत्म। आप ये 4 ही क्वेश्चन है ना मेन तो। एक रफ इसमें डाल देते हैं कि हाँ स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टार अप्रोच जो आपका, अगर देखिए 2 क्वेश्चन, जो पहला लीडरशिप वाला और नेटवर्किंग वाला, स्टार अप्रोच में लीजिए या फिर कार अप्रोच में लिखिए। स्टार अप्रोच क्या है कि सिचुएशन आप डिफाइन करिए, टास्क आपका क्या था, एक्शन क्या किया लिया आपने, रिजल्ट क्या हुआ। ये अगर आपने पैटर्न फॉलो किया ऐसे लिखने में तो दैट इज वेल एंड गुड। सिमिलरली कार अप्रोच, कार अप्रोच क्या है, कॉन्टेक्स्ट, अप्रोच एंड रिजल्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, आप कहाँ क्या काम कर रहे थे, आपने काम क्या किया, आपका रोल क्या है, यू नीड टू शो योर ओन वर्क, ध्यान रखना है, नॉट द टीम वर्क। आप एज अ टीम लीडर थे तो आपका क्या रोल था, टीम को लीड करना भी एक रोल होता है, तो वो भी डिफाइन करना है। तीसरा जो करियर प्लान का ना, स्मार्ट मेथड इस्तेमाल करना। स्मार्ट मेथड क्या होता है कि आप उसको एक बार गूगल करोगे ना, स्मार्ट अप्रोच क्या होता है करियर प्लान लिखने के लिए, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे। अब आते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। चीवनिंग के लिए आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिखवाना है, 2 चाहिए, जिसमें आपको लिखवाना है अपने लीडरशिप, नेटवर्किंग एंड एकेडमिक स्किल्स, तीनों को आपको बैलेंस करके लिखवाना है कि ये जो, मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूं, मैं लिख रहा हूँ रियाजुल भाई के लिए, तो आई नीड टू शो, मतलब मुझे जस्टिफाई करना है कि वाई रियाजुल इज फिट फॉर दिस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। मतलब वो एकेडमिक्स में भी बढ़िया है, अच्छा नेता भी है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल भी उनके अंदर अच्छा है, तो ये फिट बैठता है स्कॉलरशिप के लिए। तो एक वो बेस्ट हो गया। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो LOR में वन बेसिक। मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि LOR ऐसे बंदे से मांगना जिसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल हो। ऐसे प्रोफेसर से मत लेना कि जब मैं गूगल करने बैठूं कुछ मिले ही ना। ट्राई करना, अवॉइड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ट्राई और ट्राई टू मेक अ प्रोफेशनल मेल आईडी। डोंट यूज अ जीमेल मेल आईडी। ठीक है, जिसका भी आप बोलो तो उससे बोलो कि आप अपना मेरे को इंस्टीट्यूशन का मेल आईडी दीजिए जिसमें मेल बनाओ। क्योंकि जीमेल का मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ ना, XYZ के प्रोफेसर के नाम पे फेक मेल आईडी। शिवनी कैसे वो करेगा, तो जनरली वो अवॉइड करते हैं इस चीज को। तो ओरिजिनल मेल आईडी मांगिए उनसे, ऑफिशियल, एग्जैक्टली। एंड जिससे भी चीवनिंग में लिखवा अगर ना, जैसे चीवनिंग में अगर किसी नेता का आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल गया तो वो बड़ी बात है। बस आपका, मतलब हाँ, जीवन धन्य है। क्योंकि भाई नेता से रिकमेंडेशन लेटर मिलना ही एक आपका नेटवर्क है कि अरे बड़े आदमी के साथ आपका नेटवर्क है। बट हाँ, वो लिख भी देना चाहिए कि ठीक है, ये XYZ बेटर हाँ, रहेगा। मेरा शिवनिंग का नहीं था, मेरा कॉमनवेल्थ शेयर्ड वाला, कॉमनवेल्थ नॉर्मल वाला था। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने एक लाइन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा था कि आई एम रिकमेंडिंग रियाजुल समद बिन मोहम्मद फॉर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। जस्ट दैट्स इट, कुछ नहीं कि कब से जानता है, क्या जानता है, कुछ नहीं, दैट्स इट, एक लाइन लिख के भेज दिया था। मैं भी देख के हैरान था कि क्या लिखा है इन्होंने, बट उतना ही काम करके तो मैटर करता है वो चीज भी आपकी। इवनिंग में मैंने उसका नहीं दिया, इवनिंग में नहीं दिया था मैंने उनका। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने क्या करा था कि चारों स्कॉलरशिप मैंने फिल करी थी, चारों में अलग अलग लोगों का LOR मांगा था, क्योंकि एक से 4 बार नहीं मांग सकते ना, वो भी ऑफेंड हो जाएगा, कितने ले रहा भाई ये। अब उसको नहीं बोल सकते ना कि मैं बहुत जगह अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कहाँ एडमिशन होगा कहाँ नहीं होगा। एग्जैक्टली, सो यू नीड टू हैव गुड कांटेक्ट विद ऑल द प्रोफेसर्स, मतलब जिसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है। रियल भाई 10 महीने टाइमलाइन, लगेंगे, तो एक 8 से 10 महीने बार लगेंगे आपके। अक्टूबर में एप्लीकेशन खत्म होगी, जनवरी के मिड में या फैब के फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, फैब मिड से। और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक या मार्च के लास्ट तक आपका इंटरव्यू जाएगा। इंटरव्यू में वही आपका 30 मिनट का सेशन होगा, 4-5 लोग आपके पैनल में होंगे। फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आते आते जून मिड हो जाएगा। जून के बाद में आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको जो चीज है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जनवरी तक कॉलेज का ऑफर लेटर चाहिए। तो जनवरी में जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, वो एक आपको स्पेसिफिक डेडलाइन देंगे जहां पे आपको वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करना, आपको अपलोड करना, बंदा नहीं भेजेगा जिससे आप लिखवा रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बंदे को भेजना पड़ेगा जिससे आप लिखवा रहे हो, ठीक है। तो आपको LOR अपलोड करना है और कॉलेज का अनकंडीशनल ऑफर लेटर अपलोड करना है। अगर आपने जो 3 चॉइस की यूनिवर्सिटी फिल करी थी, खुदा ना खास्ता वहां से आपको एडमिशन नहीं मिला तीनों से, तो आपके पास में चौथी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होना चाहिए। तो जितना ज्यादा में अप्लाई कर लो उतना आपके लिए बेहतर है।
और फिर वहां पे आपको पैनल को बता देना है सच्चाई कि आपका इन 3 में नहीं हुआ था और आपको 4 में चौथी यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट करना चाहते हो। मेरे साथ में ये था कि मैंने जिन 3 का अप्लाई किया था उन 3 में मेरे को पढ़ने नहीं जाना था, कैम्ब्रिज मेरा ऑप्शन नहीं था। मेरे एक दोस्त मेरे साथ में यहाँ बैठा हुआ है जिसने मेरी कैम्ब्रिज की फीस भरी थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास में कैम्ब्रिज के एप्लीकेशन की फीस भी के पैसे भी नहीं थे और शिवनिंग की डेट निकल चुकी थी जब तक भरने की, तो मैंने कैम्ब्रिज का नाम ही नहीं डाला था कि मेरे को कैम्ब्रिज में पढ़ना है। बट मैंने पैनल को बता दिया कि उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरा कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं होगा और मेरे पास पैसे नहीं थे फिल करने के, तो इसलिए मैंने शिवनिंग एप्लीकेशन में कैम्ब्रिज मेंशन नहीं किया, 3 अदर यूनिवर्सिटी करा। तो अभी मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा चेंज कर दो, मेरे को कैम्ब्रिज जाना है, क्योंकि मेरे खानदान में कोई कैम्ब्रिज नहीं गया। मैंने सीधा ये बोला था पैनल को, मैंने ये नहीं बोला कैम्ब्रिज बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये है या वो है, अच्छी यूनिवर्सिटी सबको पता है, मेरे खानदान में कोई नहीं गया तो मैं पहला बंदा हूँ, मेरे को इसलिए जाना है कैम्ब्रिज, अब मेरे को आप जाने दो। तो उन्होंने चेंज करके मेरे को कैम्ब्रिज जाने दिया। तो आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे ना अपनी एप्लीकेशन में, उतना आपके लिए बहुत बेटर है। एग्जैक्टली तो है ना, आप वो हवाई तीर मत चलाइए कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ और मैं सब चेंज कर दूंगा, साउथ इंडियन मूवी की तरह मत जाना कि एक आदमी पूरे नेता और क्या कहता है पूरे सिस्टम को हिला दे रहा है। yeah that should be very calculated, very planned, थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा। so yeah और उससे पहले आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से सुधार लें तो बहुत बेहतर है। true वो विजिट करते हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग विजिट करते हैं, क्योंकि जनवरी के टाइम पे मेरे टाइम पे ब्रिटिश हाई कमीशन के इतने लोगों के अकाउंट विजिट हुए और जितने मेरे कॉन्टैक्ट में शिवनर है उनसे भी मैंने क्रॉस चेक करा तो उन्होंने भी बोला कि लिंक्डइन पर विजिट किया उन्होंने। और अभी शिशु और मैंने तकरीबन कई सारों को मेंटर किया है। इस बार 12 लोग हैं हमारे भाई इंडिया से जिनको हम दोनों ने मेंटर किया है। एग्जैक्टली हाँ, वो प्री डिपार्चर इवेंट में मिला था, वो कह रहा अरे आपने हमारा एसिड देखा था, आपने हमारा ये देखा था। मैंने कहा भाई मेरे को याद भी नहीं है कि किसका क्या देखा था वहाँ पे। I think Rezal bhai and Shishu, we are almost out of time and we have to यस rush. यस यस They may have- चलते हैं, बस किसी को भी क्वेश्चन हो तो बताइए। Yeah, so is the presentation like over or do you have something? Yes, it's over from presentation over, yeah. I'll share this presentation with you. Okay, guys, so I'm so sorry for the interest of time. I have clubbed the questions and we have like 2 questions in general. These people will also share their email and you can also reach out to them if you have some specific question over email. So I have these 2 questions. So what is the average percentage or CGPA requirement like? शिवनिंग के लिए कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का डिपेंड हो सकता है। जैसे कैम्ब्रिज का है 75% आपको मिनिमम चाहिए, बट मेरे कभी 75 से आए ही नहीं ऊपर। कैम्ब्रिज का मिनिमम है, बट आपको वो ये जस्टिफिकेशन देना है कि आपको वो क्यों ले। अगर आप वो जस्टिफिकेशन दे गए तो वो मेरे को लगता है कि आपने कई बार रूल्स भी ना वो साइड लाइन कर देते हैं। तो डिपेंड, तो शिवनिंग का कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड रूल कि आपको आइल्स निकालना है, आपको जीआरई देना है, आपको जीमेट देना है। शिवनिंग का कोई रूल नहीं है, उनको अनकंडीशनल ऑफर लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी का, दैट्स इट। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी का रूल हो सकता है कि मे बी आपका प्रोग्राम जो है जीआरई मांग रहा हो, मे बी आपका प्रोग्राम जो है सर्टेन लैंग्वेज मांग रहा हो, मे बी आपका प्रोग्राम जीमेट मांग रहा हो, मे बी आपका प्रोग्राम कोई अदर सर्टिफिकेशन मांग रहा हो, मे बी पाइथन वगैरह का सर्टिफिकेशन मांग रहा हो या जीआईएस का सर्टिफिकेशन मांग रहा हो। So it depends on university, so you have to check with the university that what extra document they need. Evening does not require any extra document. I see. The other question is very specific to Yazal bhai. I think both the speaker can shed some light on this. So how do you justify a second master's rather than Not the second, a it's the PhD fourth one. perhaps? Yeah. This is the fourth one. Yeah, like how do you justify? So let me like rephrase this for you. How do you justify another master's rather than going for a PhD? तो उसमें मैं क्लियरली इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से स्पेसिफिक ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैंने एसएमयू अपना मेंशन करा था, दिस इज नॉट माय फर्स्ट और सेकंड मास्टर, दिस इज द फोर्थ वन। और उसमें भी मैंने क्लियरली ये बताया कि मेरा पहला मास्टर जो था, जस्ट मैंने अंडरग्रेड कंप्लीट करा तो मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने जब 2 साल जॉब किया, तो जॉब करते करते जब मैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के साथ में था तो उन्होंने एक मेरे को मास्टर्स करवा दिया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो था पॉपुलेशन के साथ में, जनरल पब्लिक के साथ में डील कर रहा था, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तो IIM इंदौर से उन्होंने मेरे को पीजी डिप्लोमा करा दिया, तो वो पीजी डिप्लोमा मेरे को उस तरीके से करना पड़ा। थर्ड मास्टर जब मैं फ्रांस गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा था, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने मेरे को एज अ ऑनररी मास्टर्स दिया, क्योंकि मेरा एक सजेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसमें मैंने कार्बन कट इमिशन के कुछ पैसिव स्ट्रेटेजीज बताए जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से मैंने निकाले थे।
और जिसकी वजह से लास्ट 100 ईयर में पेरिस ओलंपिक पहला ओलंपिक है जो कार्बन न्यूट्रल था। तो उन्होंने मेरे को ऑनरी मास्टर्स दिया, तो वो मेरा तीसरा मास्टर्स था। और अब मेरे को चौथा इसलिए करना है क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्लाइमेट चेंज पे कौन सी रिसर्च मेरे को फॉलो करनी है और कौन सी फॉलो नहीं करनी है। तो इसलिए मेरे को अब वो रिसर्च कैरी करने की कैपेसिटीज डेवलप करनी है, क्योंकि अभी तक जो मेरे को है थ्योरेटिकल नॉलेज थी और थ्योरेटिकल के साथ में फील्ड नॉलेज थी, बट मेरे को रिसर्च या एकेडमिक नॉलेज नहीं थी जो मेरे को लैक कर रहा था। तो वो मेरे को लगा कि मेरे को अब रिक्वायर्ड चाहिए, इसलिए मैं अब चौथा मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। और अब मेरा करियर का 5 साल हो गया, तो 5 साल बाद टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, एकेडमिक डिस्कोर्स भी चेंज हो जाता है, थ्योरी भी चेंज हो जाती है और टूल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरे को अब अपने अपस्किल्स करने का समय आ चुका है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से उनको जस्टिफाई किया। Thanks, Adi. Shishu, do you have a comment? Quick Yeah. comment? Yeah, similarly, I mean, I did my first master's in chemistry. Then I thought to know about education system of India. So I did B.Ed from Jamia, and then okay, Jamia B.Ed was like teaching and learning वाला ज़्यादा focused है, उसमें एजुकेशन पॉलिसी वगैरह को उसने नहीं किया। तो एक और मैंने मास्टर्स कर लिया, कहाँ से, तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, MA इन एजुकेशन। तो उस मास्टर्स में क्या था कि भाई ठीक है वो स्कूल सिस्टम ये अब मुझे मेरा टारगेट था कि नहीं, हमको स्पेसिफिक में करना है एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, क्योंकि इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज वर्क्स, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन। तो इन सारों का ना इनइक्वालिटी जब एग्जिस्ट करता है तो हम उसको ना बहुत उस लेंस से नहीं देख पाते, सोशल जस्टिस लेंस से नहीं देख पाते। तो मैंने जस्टिफाई ऐसे ही किया कि मैं ना स्पेसिफिक सोशल जस्टिस के तरीके से जानना चाहता हूँ और कैसे हम इंडिया में इसको रिसर्च करें, क्योंकि द एरिया आई वांट टू डू, the area I want to research, that area is there is research gap in that. तो मुझे एक फाउंडेशन चाहिए यूके यूनिवर्सिटी से जिसमें कि वर्ल्ड लेवल के एजुकेशन को हम समझ पाएं। तो ऐसे करके मैंने एक वीव किया कि हाउ बीइंग केमिस्ट, हाउ आई लैंडेड बीइंग एन एजुकेशनिस्ट। तो ऐसे करके मैंने जस्टिफाई किया। बट या यू शुड हैव वेरी स्मूथ जस्टिफिकेशन कि आपने यहाँ से यहाँ क्यों गए एंड व्हाई डू यू वांट दिस। सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी यूजफुल कि अगर कोई इकोनॉमिक से इमेजिन कोई इकोनॉमिक्स से पब्लिक पॉलिसी में, तो यस इकोनॉमिक्स से पब्लिक पॉलिसी शिफ्ट इज वेरी गुड शिफ्ट कि इकोनॉमिक्स में कैसे क्वांटिटेटिव मेथड, सैम्पलिंग, ये डेटा, और पब्लिक पॉलिसी में डेटा का ही खेल है। So you can easily justify all these things. So but that should sound very scientific कि आपका जो change है ना, gradual shift है, वो आपके work experience। तो मैंने work experience से भी connect किया कि मतलब work experience जैसे activism तो work experience में माना जाता नहीं है, नारे लगाना, भाषण देना कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, LinkedIn में हम डाल भी नहीं सकते हैं। तो मैंने उसमें, लेकिन you have the option कि आपने जो informal work किया है, आप सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हैं, तो यू हैव दैट ऑप्शन एज वेल कि जैसे मैं सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा था, तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए मैंने वहां पे डाला। सो यू हैव ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज टू शिफ्ट फ्रॉम योर सो मेनी मास्टर्स। इवन आई नो सम पीपल हु आर डूइंग 5th मास्टर एज वेल ऑन चीवनिंग, बट you need to have very strong justification. Yeah. I think we would like to conclude our session here. Thank you so much, Shishu and Razil Bhai. It was a wonderful session, and you guys pretty much covered all of it. Listening to both of you, I got a sense on how people can literally jump the ladder of academia, and go from Shishu is from Rachi, go from different kind of go from a very not so famous university to these the most popular universities in the world, and then you also gave us a lot of insights about the Chevening Scholarships. If you guys have any more questions, so I think Sameer has asked one question for the third essay, include one policy, second module. What was the third and fourth? So this is the last question that we are taking. Professors. Really? Okay. So it could be professors, specific labs. So somebody, as for example, you might know about JPAL, Policy Alleviation Lab in Harvard. तो इमेजिन करिए कि ऑक्सफोर्ड में भी कुछ ऐसा लैब होगा, कोई पब्लिक पॉलिसी लैब, साउथ एशियन some research centers, some research center, yeah, it could be research groups also. तो कई यूनिवर्सिटी में रिसर्च, स्पेसिफिक रिसर्च ग्रुप्स हैं. So you can add anything, any unique thing, not very general.
मतलब आप उसको रिसर्च करना पड़ेगा. You have to go through their website. Yeah. Okay, so now we will just conclude the session here. If you guys have more questions, we have already shared Shishu's and Yazil Bhai's LinkedIn account. We'll also share their email in the presentation. So I would like to invite Zikra to offer a vote of thanks on behalf of the club. Zikra, are you there? Hello, good evening, everyone. I am Zikra is secretary of AMU Economics Students Club, and these guys are the people who are running the show. Amazing. Good evening, everyone. I am Zikra, the Joint Secretary of AMU Economics Student Club. On the behalf of our club, I would like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Sishu Ranjan and Mr. Riyazul Samad for sharing their visuals, knowledge and experience with us. Sir, your experience that you shared with us is a true guidance for us. It helped many students who are dreaming to study in UK with their scholarship. It motivate and guide many students, sir. Thank you so much for your guidance, sir. Now I would like to thank all the club members and my team and all the participants for joining today's session. As we are concluding this session, I would just add a small note that dreams can only be achieved through right guidance and true dedications. So keep chasing your dreams and working for your future. Thank you and have a nice day to all. Thank you, everyone. Thank you. For joining. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank you. Thanks. You have been an amazing, outstanding audience. Yeah. And thank you specifically to Atif and the Economics Club team. Yeah, Wish you all the deserves best. a special appreciation for putting everything together. I was just like coordinating with you. Thank you, everyone. Thank you. Lovely, lovely. Bye bye. Take care. Good night, everyone. Good night.